Good evening, you're watching the prime time on Hornbill TV. Let's have a look at the news headlines. The United States imposed sanctions on 19 Indian firms and 2 Indian nationals on Wednesday, alleging their involvement in aiding Russia's military activities in Ukraine by providing essential materials and technology. In a shocking incident that occurred on Saturday in Jiribam district, where a constable from the Manipur police fatally shot his own colleague during a routine deployment. Defense Minister Rajnath Singh said that the recent attack in Jammu and Kashmir was not an issue of security and lapse, and asserted that the situation will come when terror activities will be fully wiped out and Jammu and Kashmir will develop fast. BJP MP and national spokesperson Sudhanshu Trivedi on Saturday accused the Congress party of plundering money if it came to power further, and stated that some people like Congress are such that they loot the wealth after coming to power. Let's have a look at the news in detail. Following the ban of 19 Indian firms and 2 Indian nationals by the US, India's Ministry of External Affairs said that it was working on sensitizing Indian companies on applicable export control provisions and also informed them of new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. MEA spokesperson Ranveer Jaiswal, however, said the sanctions transactions and companies are not in violation of Indian laws. The United States imposed sanctions on 19 Indian firms and 2 Indian nationals on Wednesday, alleging their involvement in aiding Russia's military activities in Ukraine by providing essential materials and technology. The sanctions, part of a larger action involving nearly 400 entities and individuals globally, come at a sensitive time as US-India relations are already strained over the alleged involvement of an Indian national in assassination plot targeting Sikh leader Gurpatwant Singh Pannu. 19 Indian companies. We have seen these reports of US sanctions. India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls. We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes: the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. Regular strategic trade, export control outreach events for Indian industries and stakeholders are being carried out by agencies of the Government of India. We are also in touch with the US authorities to clarify. Defense Minister Rajnath Singh on Saturday confirmed that patrolling of both India and China has started in Depsang and it will soon begin in Demchok. He said India wants to keep a cordial relationship with all its neighbors, and for more than a year discussions at both army and diplomatic levels have been happening.
देखिए, भारत का जहां तक प्रश्न है, भारत अपने सभी पड़ोसी देशों के साथ अपने रिश्ते अच्छे बनाकर रखना चाहता है और भारत और चीन के बीच लगातार साल डेढ़ साल से ये बातचीत चल रही थी, आर्मी के लेवल पर भी और डिप्लोमेटिक लेवल पर दोनों स्तर पर बातचीत चल रही थी। एक समाधान हो चुका है और साथ ही साथ अब डेमचो पर तो पेट्रोलिंग का सिलसिला प्रारंभ हो गया है, भारत का भी और चाइना का भी, मैं जिस रूप में होना चाहिए, और वैसे ही डेप्सांग का भी प्रारंभ होगा। Rajnath Singh also commented on the recent attack in Jammu and Kashmir and said that this was not an issue of security lapse. He insisted that attacks have been reduced and asserted that a situation will come when terror activities will be fully wiped out and Jammu and Kashmir will develop fast. और ऐसी परिस्थितियां वहां पर पैदा होंगी फिर आतंकवादी वारदातें पूरी तरह से वहां से समाप्त होंगी और जम्मू कश्मीर का तेजी से डेवलपमेंट। जिस तरह से परिवर्तन हुआ जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के बाद का अटैक बढ़े हुए हैं, कुछ जो सिविलियन पर काफी अटैक हो रहे हैं। नहीं, देखो, ऐसा ही नहीं कह सकते कि बहुत बढ़े हुए हैं, लेकिन जो भी हुए हैं इधर एक 2-3-4 घटनाएं हुई हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज पूरी तरह से सजग है और उसका जवाब भी दे रही है। ऐसा नहीं है कि उसका जवाब नहीं दिया जा रहा, बहुत सारे टेररिस्ट मारे भी हैं। Union Defence Minister Rajnath Singh on Saturday visited the Field Gun Factory, Kanpur, a unit of Advanced Weapons and Equipment India Limited in Uttar Pradesh. According to an official statement, the factory specializes in manufacturing barrel and breech assemblies of various artillery guns and tanks, including tank T-90 and Dhanush gun. During the visit, the Union Minister inspected key facilities, including the heat treatment and the new assembly shop of the factory, to take stock of critical indigenous defense capabilities. He was accompanied by Secretary Sanjeev Kumar and Secretary the Department of Defense R&D Chairman DRDO Dr. Samir V. Kamat. Following the visit to the shop floor, Rajnath Singh was briefed by the CMDs of 3 defense public sectors undertakings based in Kanpur. AWEIL Troop Comforts India Limited, Gliders India Limited and Director of Defense Materials and Stores Research and Development Establishment, a DRDO laboratory located in Kanpur. We'll be right back after a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारो संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने एंजॉय राइड एक्टिवा 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 स्कूटर ले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा। जिसे बनाने में किसी भारतवासी का पसीना बहा हो उसे खरीदने पर जोर देना चाहिए और ये सबके प्रयास से ही संभव होगा। वोकल फॉर लोकल हमें व्यवहार में लाना ही होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान से प्रेरित उत्तराखंड सरकार इस दिशा में हर महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। प्रकृति, संस्कृति और विरासत को अपने अंदर समेटे उत्तराखंड में बने प्रोडक्ट एक ब्रांड के रूप में उभरते जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा ग्रामीण उद्यमियों एवं कृषि उत्पादों को भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार द्वारा लॉन्च किया गया हाउस ऑफ हिमालयास ब्रांड क्षेत्र के प्रामाणिक हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा दे रहा है। वहीं उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसे एक दिन में सबसे अधिक 18 GI टैग मिले।
ये सभी प्रयास उत्तराखंड सरकार के वोकल फॉर लोकल के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। लोकल उत्पादों को अपनाकर हम न केवल उत्तराखंड की विरासत को सहेज रहे हैं, बल्कि स्थानीय लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त भी बना रहे हैं। आइए इस त्योहार स्थानीय उत्पादों को अपनाकर उत्तराखंड की प्रगति में अपना योगदान दें और साथ मिलकर एक आत्मनिर्भर और समृद्ध उत्तराखंड बनाएं। Welcome back. After the break, let's have a look at more news. Addressing a press conference on Saturday, BJP MP and national spokesperson Sudhanshu Trivedi accused the Congress party of plundering money if it came to power, further stated that the Congress party would even deny people access to basic services. Trivedi said that whatever the Congress chief said clearly shows that if wealth, which should be an asset and prosperity to people, goes to Congress's hands, it becomes a disaster. He said that under the leadership of PM Modi, the way BJP works towards people's welfare in the last 1 to 2 budgets, they have increased the tax and duty on luxury items, but free ration is being given to the needy people. However, some people like Congress are such that they loot the wealth after coming to power and keep people deprived of their basic facilities. दीपावली के पर्वों की श्रृंखला चल रही है और आज गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का पर्व है और ये मां लक्ष्मी यानी वित्त के समायोजन कैसे किया जाना चाहिए उसकी प्रेरणा देने वाला पर्व है ताकि समृद्धि कैसे आए। और उस समय में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के मुंह से जो निकला है, उन्होंने दिखाया है कि अगर सत्ता जनता के लिए संपत्ति और समृद्धि बननी चाहिए तो उनके हाथ में आकर वो विपत्ति बन जाती है। और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से जन जन के कल्याण के लिए आगे बढ़ते हैं उसका मैं प्रमाण देना चाहता हूं। जस्ट आपने देखा होगा पिछले 2-3 बजट से जो प्रीशियस जेम्स एंड ज्वेलरी एंड द लग्जरी आइटम्स के ऊपर ग्रेजुअली टैक्स एंड ड्यूटी बढ़ाई गई है और जरूरतमंद जनता को अनाज मुफ्त मुहैया कराया गया है। मोदी जी का यह विचार उस भगवान राम के आदर्श से प्रेरित है, चूंकि दीपावली का पर्व है, जिनके लिए लिखा गया है कि मणि माणिक महंगे किए और सहजे तृण जल नाज, तुलसी सोई जानिए राम गरीब नवाज। तो लग्जरियस आइटम्स को के ऊपर टैक्स और गरीब व्यक्ति के लिए अनाज की उपलब्धता। मगर अफसोस की बात यह है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दल प्रमुख हैं, जिनके दिमाग इतने खाली होते हैं कि सत्ता में आने पर खजाना खाली कर देते हैं और इसके बावजूद जनता को वांछित व्यवस्था उपलब्ध नहीं करा पाते। मैं यह बात कहना चाहता हूं कि कांग्रेस अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वयोवृद्ध कांग्रेसी नेता हैं। A shocking incident occurred on Saturday in Jiribam district where a constable from the Manipur police fatally shot his own colleague during a routine deployment. The tragic event unfolded around 11 a.m. in Mongbung village, an area currently under heightened security due to ongoing conflicts in the region. According to preliminary reports, the police constable, who holds a rank below that of his officer, allegedly fired a shot from his service rifle, hitting the sub-inspector rank officer. The exact circumstances leading to the shooting remain unclear, with authorities investigating the motives behind this deadly act. The deceased sub-inspector was identified as Mohammad Shah Jahan,
a resident of Yaripok, Tulihal, posted at Jiribam police station, and the accused police constable has been identified as Akoijam Bikram Singh of Naharup Pangong Makhong. Local sources said that the Manipur police forces had been stationed in Mongbung village to maintain order and ensure the safety of residents amid escalating tensions in the district. As news of the incident spread, senior officials from the Jiribam police station arrived at the scene to conduct a thorough investigation. The accused police constable has been arrested to ascertain the facts surrounding the shooting and to take appropriate actions. In the wake of the shocking rape and murder case at Kolkata's RG Medical College, junior doctors have called for the Central Bureau of Investigation to take strict action and ensure capital punishment for those responsible. Dr. Rajdeep, a junior doctor, emphasized the need for severe consequences and said capital punishment should be given to all the accused, while underscoring the widespread anger and demands for justice within the medical community. Dr. Rajdeep also urged the CBI to compile a comprehensive charge sheet, noting the importance of including names that may not have been mentioned initially. As November 9 marks 90 days since the incident, Dr. Rajdeep affirmed that the protests will continue until justice is served. Earlier on October 22, the junior doctors protesting over the RG Medical College rape and murder case in Kolkata ended their hunger strike after a 2-hour-long meeting with Chief Minister Mamata Banerjee at the State Secretariat, Nabana. The tragedy unfolded on August 9 when the second-year medical student was found dead in the seminar hall of RG Medical College and Hospital. The incident has ignited protests across West Bengal, with doctors nationwide expressing their solidarity with the junior doctors in Kolkata. The second-year medical student was found dead at RG Medical College and Hospital in Kolkata on August 9. The victim was found dead in the seminar hall of the college. जैसे सभी को मालूम है 4 तारीख को सियालदा कोर्ट में एक सुनवाई है और 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। पहले मैं 4 तारीख सियालदा कोर्ट के बारे में बोलने देना चाहता हूं कि पिछले बार भी 21 अक्टूबर को सियालदा कोर्ट में सुनवाई थी, जहां उन्होंने कुछ तरह से डिनाई किया था या वो कुछ प्रेजेंस नहीं था उनका, जिसके कारण से हम लोग बहुत हताश हैं उन लोग के ऊपर। इसलिए हमने 30 तारीख को सीजीओ का अभियान किया था। WBMC से सीजीओ तक गए थे। वो भी एक हम लोग का सिंबॉलिक है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि सीबीआई अति द्रुतता से ये जांच करके जो दोषी है सबको लाया जाए। और संजय राय ही दोषी नहीं है, उसके साथ और भी बहुत दोषी है। अकेले संजय राय का ये करना असंभव है। तो हम चाहते हैं जितने जन दोषी है सबको कटघरे पे लाया जाए, सबको कैपिटल पनिशमेंट हो। ये हम चाहते सीबीआई से। चार्जशीट उनका स्ट्रांग बने। हम चाहते सप्लीमेंट चार्जशीट में जो भी आए सबका नाम ले। उन्होंने बहुत जन को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने संदीप घोष को इन्वेस्टिगेट किया है, उन्होंने इनडायरेक्टली आशिक पांडे को भी घिराव किया है। तो अगर इतने जन किए हैं तो हमको मालूम चलना चाहिए बाकी लोग का क्या है। बाकी लोग का कुछ भी उल्लेख उन्होंने चार्जशीट में नहीं किया है। रहा बात अगला स्टेप क्या है हमारा, अगला स्टेप हम सबको मालूम है 9 नवंबर इस अभय का न्याय विचार का और अभय दीदी का जो इंसिडेंट था उसका 90 दिन हो रहा है। 90 दिन यानी सीबीआई के पास चार्जशीट फाइल करने का आखिरी समय। तो इस जगह हम बोलना चाहते हैं कि ये जो 90 दिन एक खुद की जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। इस 90 दिन में पहला हर जगह हर मेडिकल कॉलेज में अभय की
एक द्रोह की एग्जीबिशन होगी, जहां अभया का जो जो हमारे अभी तक हुआ है सबको हम लोग एग्जीबिशन करके दिखाएंगे। दूसरी, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में उसी दिन 9 नवंबर हम लोग एक ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। तीसरा, अभया दीदी के न्याय विचार के लिए हम WBJDF कॉलेज सीट से एस्प्लेनेड धर्मतला तक हम लोग एक मिছিল करेंगे, एक महासमावेश करेंगे, उधर जाएंगे और रास्ते पे भी चल के हम बोलेंगे कि ये आंदोलन न थमा है, न थमेगा, न रुका है, न रुकेगा। हम लोग अभी भी राजपथ में हैं, हम लोग अभी भी रास्ते में हैं, हम लोग अभी भी न्याय विचार के लिए लड़ रहे हैं। जब तक न्याय विचार ना मिल जाए हम लोग ना हिलने वाले हैं, ना हटने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना हटने वाले, और इस न्याय को लेके हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम डॉक्टर राजदीप, सेकेंड ईयर PGT। Time for a short break. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी, यारों संग है फ्रीडम सारी। फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ, लाइफ माने जॉय राइड। एक्टिवा एक्टिवा एक्टिवा, स्कूटर एटले एक्टिवा, स्कूटर बोले तो एक्टिवा। Welcome back. After the break, let's have a look at more news. Congress Chief Mallikarjun Kharge's on pre-poll SOPs spark a controversy on Friday, with Prime Minister Narendra Modi launching a fierce attack and saying the opposition party was badly exposed for making unreal promises, and the Bharatiya Janata Party demanding an apology ahead of the Maharashtra elections. Modi's comments came a day after Kharge advised Congress units to announce poll SOPs based on fiscal viability, warning that an unplanned approach could lead to financial difficulties and negatively impact future generations. His comments had come in the context of reports that Karnataka could review its free bus travel scheme for women, and Kharge hit back, accusing the BJP of making false promises and saying Modi ki guarantee is a cruel joke on 1.4 billion Indians. Assam's Chief Minister Himanta Biswa Sarma, commenting on it, said whatever announcement the Congress make, they do it without looking at the budget and state's revenue. However, Congress leader Priyanka Kharge said Mallikarjun Kharge clearly stated that everyone needs to keep their promises within their available resources. देखिए, मेरा लगता है कि ये बात कर्नाटक चुनाव से ही बात चर्चा में आए थे कि कांग्रेस जो घोषणा करता है वो बिना बजट करता है, बिना स्टेट का रिसोर्स देखते हुए करते हैं। राहुल पगलापन करते हैं। हिमाचल आज उसके लिए सफर कर रहा है। कर्नाटक में डेवलपमेंट एक प्रकार में रुक लग गया है, तो देर आए दुरुस्त आए। मैं खारगे जी का बयान को स्वागत करता हूं कि हमें पॉलिटिकल पार्टी को इतना ही लोगों को प्रॉमिस करना चाहिए जो हम कर सकता हूं। जो हम कर नहीं सकता हूं ऐसा प्रॉमिस हमें नहीं करना चाहिए। Considering Mr. Kharge's experience, I think he has it in him to even pull up the Prime Minister and tell him that this is the problem with the economical fiscal responsibility that needs to be done. And what did Mr. Kharge say? Very clearly he said that all of you need to keep your promises limited to your available resources. What is wrong with that? Have we overpromised and under-delivered? Where are the 2 crore jobs that Mr. Modi had promised? What happened to Make in India? What is the manufacturing output? It has dipped after 10 years.
Where is the land that China has taken back? He promised, no, not even an inch of land was taken. Then what is this bilateral talks going on for maintaining status quo? The status quo was disrupted, right? So let us have a debate on this. No, we will sit. Congress is ready to sit with any of the BJP or including the Prime Minister and debate on Modi ji ki guarantee. 10 saal mein kya kiye hai? Amrit Kal, Viksit Bharat. How many people are relinquishing their citizenship? Highest. Why are every hour 10 Indians are caught and arrested illegally trying to enter United States of America? Modi ji, do you know that? छोड़ के जा रहे हैं भारत. And half of them are Gujaratis. So let them answer all that. That is all we have for now. For more news and updates, keep watching Hornbill TV. कॉलेज बोले तो दोस्ती यारी यारों संग है फ्रीडम सारी फ्रीडम इक्वल्स टाइम ऑफ लाइफ माने जॉय राइड एक्टिवा स्कूटर एटले एक्टिवा स्कूटर बोले तो एक्टिवा. Because sometimes news is more than mere information. And we all need a little more clarity on the details about life, people and events that really matter. For individuals that demand reliable news. From reliable news organizations and credible and award-winning journalists. And how we look at the world. This is exactly the reason why we strive to serve you and the society. Because proper news can not only inform our lives but also change the way we look at it. We pursue events that are not only important